So for the past papers of mensuration, you need to remember one thing, that you are going to deal with shapes all the way from 2 dimension until 3 dimension. कोई सा भी shape आपके पास आ सकता है क्वेश्चन में। और आज जो हम पास पेपर्स करने लगे हैं mensuration के, तो यहाँ पर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए जाएंगे। So starting up right from here, so we have a question saying that this is a solid prism. If you see, this is a prism having the rectangular sides. इसकी sides rectangular हैं if you see, और front पे आपको एक trapezium नजर आ रहा होगा। Right over here in the front, you could surely see a trapezium. Now the point here is कि अगर मैं इस पूरे शेप को प्रिज्म कह रहा हूं, तो ये प्रिज्म किस लॉजिक से है? So it is prism because of its sides being a rectangle. आप जो भी साइड इसकी नोटिस करोगे, वो सारी साइड्स आपको रेक्टेंगुलर नजर आएंगी, whether be it this one or the sides at the back. आपको जो बैक पर साइड नजर आ रही है राइट ओवर हियर, ये भी एक रेक्टेंगल है, और जो बॉटम पे आपको साइड नजर आ रही है, ये भी एक रेक्टेंगल है। सो इफ द साइड्स आर रेक्टेंगुलर, तो आप उस शेप को कहते हैं प्रिज्म। नाउ स्टार्टिंग अप, हमें बहुत सारी डायमेंशंस गिवन हैं, और पहले पार्ट में कहा जा रहा है दैट वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। तो अब ट्रेपीजियम ABCD आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इट्स राइट ओवर हियर, एंड वी नीड टू फिगर आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेपीजियम। तो अब ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इट्स एरिया इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स sum of parallel sides multiplied by height. Now the parallel sides could be like this or they could be like this. तो ये सभी पैरेलल कंसीडर की जाती हैं, और इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन चल रही होती है, वेदर बी इट लाइक दिस और लाइक दिस। तो इस लेंथ को हम कहते हैं हाइट। द पैरेलल साइड्स आर A and B. नाउ स्टार्टिंग अप विद दिस शेप, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास दो पैरेलल साइड्स हैं। The first one is right over here as 2 and the second one is right over here as 6. So we are going to write it as 1 over 2 times the sum of parallel sides, which is 2 and 6, multiplied by the height, which is 3. तो यहाँ पर आपको height नजर आ रही होगी as 3. So this is going to give you the area for this trapezium, and this one is pretty easy, and this is actually a question of paper 1. तो यहाँ पर जो calculations भी आएंगी वो relatively easy होंगी. So it's 8 times 3. We can just cancel out 2 and 8. We'll be left with 4, and it is going to be 4 times 3, which is 12. So 12 is your area for this particular shape. Now moving forward, तो हमें कहा जा रहा है that we need to calculate the total surface area of this prism. So the total surface area would be the area of all the surfaces available. Now we have different surfaces. We have a front, a back, then the left side, then a top rectangle over here, then we have a rectangle at the bottom, and then we have a rectangle at the right side as well. तो आपको टोटल सरफेसेस पहले काउंट करनी है, उनको जज करना होगा, एंड देन you need to start solving them. So we have a rectangle over here. This is our, let's say, first side. Then we have a trapezium at the back, second side, trapezium at the front, third, rectangle at the back, fourth, rectangle at the bottom, fifth side, and this slanted rectangle over here. So this is our seventh, in fact the sixth side. तो हमारे पास in total 6 sides बन रही हैं यहाँ पर. What we need to do is we need to calculate area for each one of them specifically. अब area find करने के लिए अगर हम start करें right from this very first rectangle over here,
तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारी लेंथ और ब्रेथ गिवन है एज 2 and 20. So we are going to multiply them. Then if we deal with the second shape, which is a trapezium at the back, it is just like the trapezium at the front. तो आप क्या करोगे, जो फ्रंट वाला ट्रेपीजियम है उसके एरिया को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे. सो यू हैव द फ्रंट एंड बैक trapezium. Now moving forward, we have the next shape, which is a rectangle at the back side. आपको बैक साइड पर एक रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा राइट ओवर हियर. सो दिस रेक्टेंगल इज आवर शेप नंबर 4, और इसका हम एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ और ब्रेथ को ले लेंगे एज 3 and 20. नाउ दिस इज समथिंग वेरी टेक्निकल. आप देखें यहाँ पर आपको 20 गिवन है, तो यहाँ भी आपकी जो डायमेंशन होगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज 20. तो आपने इसको 20 ही कंसीडर करना है एट द बैक right over here. So you end up getting 3 times 20. Now moving to the next shape, which is a rectangle at the bottom. नीचे आपको एक rectangle नजर आ रहा होगा right over here. So this rectangle is having some length and some breadth again. So this is 6 by 20. तो आपने 6 और 20 को यूज करना है and you need to multiply them to get your final answer. और फिर उसके बाद एक आपका जो एरिया है सिक्स शेप, वो स्लांटेड रेक्टेंगल है राइट ऑन द राइट साइड, और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपने ये वाली साइड कंसीडर करनी है राइट ओवर हियर. सो इट इज हैविंग 5 and 20. तो 5 और 20 आपने यहाँ से यूज करना है. इट्स 5 times 20, and that would actually give you the entire area for this shape, which is 40 plus 24 plus 60 plus 120 plus 100. Any one of you having any sort of query, or is everyone perfectly clear on this? I need a confirmation from you people if everyone is perfectly clear or not. Okay, perfect. तो अब आपने बस इन सबको simply add करना है and you'll get your final answer. It is going to be 64, 124, 224, and then 344. 344 is your final answer. Now we are done with this question. We are moving on to the next one, which is again a simpler question, and these questions are also assessed in paper 1 mainly. यहाँ पर हमें एक like ट्राइंगल गिवन है राइट ओवर हियर, और इस ट्राइंगल के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद एन आर्क, या जिसको आप सेगमेंट कह सकते हैं. सो दिस शेप is basically an arc or a segment, and since it is larger or it is like greater than half of the circle, तो इसको हम मेजर सेगमेंट या मेजर आर्क कहते हैं. अब मेजर आर्क में जब भी आप डील कर रहे हैं तो इसको हमने डिस्कस किया था कि इसका एंगल फाइंड करना जरूरी होता है. सो वी नीड टू फिगर आउट द एंगल ओवर हियर. इस एंगल को फाइंड करेंगे पहले, और इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपके पास वैल्यू हो जाएगी एज 300. So you have the angle for this major segment, and you have the radius as well. Can any one of you tell me the radius for this major segment? इस मेजर सेगमेंट का रेडियस कितना यूज करेंगे हम? 15. Very good. We have the radius right over here. So now what you are going to do is you are going to put up the values in the formula. Formula क्या था हमारे पास? It was theta over 360. Since we are finding the area,
तो आपने सर्कल का एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना है, विच इज पायर स्क्वायर। आर्क या सेगमेंट में जब भी डील करते हैं तो θ/360 लगाना वाजिब है, फर्ज है ये आपके ऊपर। और आपने जब भी कभी एरिया फाइंड करना हो, आर्क लेंथ फाइंड करनी हो, आपने θ/360 लाजमी लिखना होता है आर्क के अंदर। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सर्कल का एरिया आ जाएगा, आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो सर्कमफेरेंस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द वैल्यूज विद अस। तो हम क्या करेंगे, थीटा को रखेंगे 300 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स पाई विच इज 3.14। अगर आप पेपर वन में हैं और आप ओ लेवल से हैं तो आपने 22/7 यूज करना होगा। देन द रेडियस इज 15 स्क्वायर्ड। Now what we are going to do is we are going to cancel it out as much as possible. तो जितना कैंसिलेशन हम कर सकते हैं उतनी कैंसिलेशन हम कर देंगे। Like zeros would be cut it out over here, and we have 15 squared, and it would reduce to 10 and 12, and further cancelling out 5/6 रह गया हमारे पास। Now we are left with 5/6 times 22/7 times 15 square। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लाइक we'll just simply multiply the numerators right over here and the denominators। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी एज 5 टाइम्स 22 टाइम्स 225 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर 16 तक याद होने चाहिए एज पर आवर सिलेबस। नाउ वी हैव एंडेड अप आवर वैल्यूज अंटिल हियर। अब आप सिंप्लीफिकेशन चाहें तो कर सकते हैं। दैट वुड गिव यू 21 and 11। Now we have our values over here, and we will end up at 55 times 225 over 11। Now since this is paper one, तो आप लोगों ने calculations जितनी possible हो सकती हैं वहां तक करके अपने आंसर को ड्रॉप कर देना है। इफ इट वाज टू बी इन पेपर टू या आपके पास कैलकुलेटर हो तो फिर आपने पूरी वैल्यू सॉर्ट आउट करके यहाँ पर लिखनी होगी। Now, moving forward onto the next part, they are saying you need to figure out the perimeter of the major segment। अब perimeter का सीन ये है कि perimeter is basically the boundary of that shape। अगर हम major segment की बात करें तो major segment हमारे पास कुछ इस तरीके से lie कर रहा है। Now, what we are going to do is we are going to figure out this arc length. This is our radius, and this one is the radius as well। तो अब मैंने क्या करना है, रेडियस 15 कंसीडर करना है दोनों साइड्स पे। आर्क लेंथ मैंने करनी है फाइंड। सो फॉर द आर्क लेंथ इट्स θ/360 टाइम्स 2 पाई आर। नाउ देयर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो आपके पास राइट साइड पर एक लाइन बनी है राइट ओवर हियर। So what you need to make sure is that whenever you are writing something, you're not allowed to write over here। इस साइड पर लिखना अलाउड नहीं है। यहाँ पर मेंशन भी है एंड यू नीड टू बी वेरी कॉशियस विद दैट, क्योंकि आप जो भी वर्किंग यहाँ पर करेंगे वो स्कैन नहीं होती है। बिकॉज द थिंग इज कि हमारे पेपर्स स्कैन होकर जाते हैं एग्जामिनर्स के पास, एंड whosoever is checking the paper would have the scanned copy of yours। तो आपका पेपर सिर्फ इतना ही स्कैन होगा and it would not be scanned more than this। So if you are writing anything over here, it would not be rewarded। And one thing more is कि अगर आप कभी कुछ गलती कर देते हैं, लाइक आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपने उस चीज को या उस वर्डिंग को काटना है सिर्फ ऐसे, लाइक दिस। यू आर नॉट अलाउड और रिकमेंडेड टू डू समथिंग लाइक दिस। ऐसे नहीं करना है आपने, और ना ही कुछ ऐसे करना है। ग्राफिटिंग नहीं करनी है। आपके जो स्किल्स हैं ग्राफिटिंग वाले वो आप अपनी रफ कॉपी तक रखते हैं वो ठीक है, लेकिन पेपर में आपने बिल्कुल भी ग्राफिटिंग और अजीब अजीब निशान
नहीं लगाने, क्योंकि एग्जामिनर को डराने के लिए हमारी सॉल्यूशंस ही काफी हैं। मजीद खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनर वैसे ही डर जाएगा। तो अब आ जाते हैं थीटा की तरफ। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास था 300 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स बाय 15। इसको आप सिंप्लीफाई करते जाओगे एंड यू विल एंड अप गेटिंग योर फाइनल आंसर एज 10/70, in fact 84 times 44 times 15. Now I'm not going into the detail of this solution. मैं बस आपको पेरीमीटर का लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पर। द पेरीमीटर ऑफ आर्क इज एक्चुअली 2r प्लस s। ये जो दो रेडियस आते हैं आपके पास, इन दोनों को आपने ऐड करना होता है विद द आर्क। तो ये जो आर्क आएगा आपके पास, इस आर्क को आपने रेडियस के साथ ऐड कर देना है। So that would be a perimeter for this particular shape. Now, moving forward, you will end up getting the perimeter as 15 times 2 plus the arc length, which is going to be 10 times 44 times 15 divided by 84. Now, if any one of you is from IGCSE, तो आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। If someone is from O levels and this comes up in paper 1, तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आपने मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है और फिर इस तरीके से लिख देना है आंसर को। एंड इफ इट कुड बी लाइक सॉल्व फर्दर, तो आपने फर्दर भी फिर सिंप्लीफाई करना होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड on to the next question, and this one is something really difficult and something very long। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर 2 में आते हैं जनरली। नाउ इन सच क्वेश्चंस व्हाट द एग्जामिनर डज इज कि वो कनेक्ट कर देते हैं अलजेब्रा को विद mensuration। So you have the concepts of algebra coupled up with the unknowns, जो x y या वेरिएबल्स आ जाते हैं अलजेब्रा वाले, वो सारे वेरिएबल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। Now they are saying that we have a cylinder over here, and this cylinder is actually having a volume of 1500। This is shape number 1, और ये कह रहे हैं शेप नंबर 1 या शेप I में हमारे पास वॉल्यूम है 1500। वी हैव द रेडियस एज 4। तो अब रेडियस 4 आ चुका है और मुझे हाइट h गिवन है। आई नीड टू फिगर आउट दैट हाइट। So I need to actually find that height which is represented by h. So what I'm going to do is I'm going to apply the formula of volume। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करने लगे। एनी वन ऑफ यू हु रिमेंबर्स द लॉजिक ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम कैसे फाइंड करते थे हम किसी भी शेप की? एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी आइडिया? वॉल्यूम फिगर आउट करने के लिए हमें निकालना होता है एरिया, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं मिसिंग लेंथ से। वेरी गुड। So we are going to take up the area and multiply it with the missing length. So area of the top face is basically a circle over here. So it's going to be pi r square multiplied by the height, which is right over here. So it's going to be pi r square times h. आपने क्या करना है अब? You just need to pick up the values. Volume आपको given है 1500. You're going to put it over here and put up the radius as 4. So the volume is going to be figured out with this logic, और यहाँ से फिर हम height को find कर सकते हैं। So height is unknown over here, it's h। We are allowed to use calculator over here। आपने क्या करना है, 7 को वहां लेकर जाना है दूसरे साइड पर। It is going to multiply, 22 is being multiplied over here, it is going to get divided, and the same goes with 4 square, which is going to be divided on the left side। So you will end up having 1500 times
7 divided by 22 and 4 square, which is 16. So this is going to give you the value of h over here. Any one of you having any sort of query, just let me know. Or are you all like perfectly clear on this? सबको क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी है तो पूछ लें. Yes, all of you are perfectly clear until here. Okay, perfect. So now moving forward, we have the height. Can any one of you tell me the value of h from here? What's the final value of h? Okay, so we have the height as 30 over here. Now they are saying that shape I is made by pouring liquid into a mold at a rate of 0.9 liters per minute. Find the seconds it take to pour this liquid into the mold. अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है 1500 cm क्यूब. यहाँ से हमने हाइट निकाली है 30 सेंटीमीटर. और इस शेप को बनाने के लिए इन्होंने कुछ लिक्विड पोर इन किया है, which is poured at a rate of 0.9 liters per minute. तो हमें एक मिनट में यानी 60 सेकेंड्स में 0.9 लीटर्स पुट इन करना था. तो इस पूरे कंटेनर को बनाने में या यूं समझ लें कि इसको फिल अप करने में हमें कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स बताना है आपने. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू पिक द वॉल्यूम राइट फ्रॉम हियर व्हिच इज 1500. अब मुझे ये मालूम है कि 0.9 लीटर्स इक्विवेलेंट होते हैं 900 cm क्यूब के, because we did this particular logic in the very last explanation of mensuration, जहां पर मैंने बताया था कि 1 liter is equivalent to 1000 cm cube. So 0.9 is going to give you 900 in terms of centimeter cube. Now moving forward, 900 cm cube is to be filled in 1 minute, and actually they are asking you about the time in seconds. तो आपने क्या करना है, आपने फिर seconds को ही use करना है. So we are going to use 60 seconds over here instead of minutes, and I need to fill up the volume of 1500. So I'll put up 1500 cm cube and I'll figure out the time right over here. So the time is going to be figured out by cross multiplication. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे and we'll get our final answer. Can any one of you tell me the final answer? It's going to be 1500 times 60 is equals to 900 times x. और फिर x को हम फाइंड कर लेंगे. तो 1500 times 60 divided by 900 हो जाएगा, and that would give you the value of x, which is the time for 1500 cm cube to be filled. Can any one of you tell me the answer? I think it should be 100 seconds. Yes, is it 100 seconds? Okay, perfect. तो 100 seconds हमारा आंसर आ गया है. Now we are moving on to the next part, जहाँ पर हमें एक प्रिज्म गिवन है अगेन. अब मुझे ये प्रिज्म कैसे पता चल रहा है that whether it is a prism or not? It is having the sides as rectangular. If you see, the slanted right hand side is a rectangle, the left side is the rectangle as well, और जो आपकी base है वो भी एक proper rectangle है. Now they are saying that this prism is actually a triangular prism. As we can see, its cross section is a triangle.
Now they are saying that it is a prism with length of 8. तो हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर and they are saying that the volume is 1500 cm cube. We need to find the value of x. So for the prism, the volume was cross sectional area multiplied by height. The volume of prism was cross sectional area multiplied by height. It could be height or length. Now we have the cross section as a triangle over here. तो हमने क्या करना है, हमने इस ट्राइंगल का पहले फाइंड करना है एरिया एंड दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ x. So it is going to be the area of triangle. Can any one of you tell me the area of triangle? What's the formula of area of triangle? Yeah, any one of you having any idea? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Okay, perfect. It's half times base times height. Now we have the area of triangle. Height हमें given है 12x, तो हमने height की जगह पर रख देना है 12x और base की जगह पर रख देना है 5x. So we will end up getting 60x squared divided by 2. All the numerator values have been multiplied together and divided by 2. So that is going to give you 60x square over 2. आप क्या करोगे, आप इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लोगे so that you end up getting 30x square as your area for the triangle. अब मुझे ये पता चल चुका है कि मेरे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है फॉर दिस ट्राइंगुलर शेप इज 30x स्क्वायर. मैंने फॉर्मूला को एज इट इज यूज करना है बट विद the volume being 1500, the cross sectional area as 30x square, and the length or height as x. So this is going to be 30x square times 8. तो 30x square times 8 हो गया. Now you just need to simplify this. आप इसको logically simplify करेंगे बिल्कुल algebra की तरह and you will have 1500 divided by 8 is equals to 30 and x square. Now I want someone of you to keep on telling me the answers right away. 1500 divided by 8 करके बताएं कितना आ रहा है. It should be around 185 if I'm not wrong. Perfect. 187.5 is your value is equals to 30x square. अब आपने 30 को पकड़ना है and you need to pick up 30, bring it to the left side and it would be divided. 187.5 divided by 30 is equals to x square. Yes, anyone of you who could tell me the value? Okay, 6.25 is the value for x square. So x square is equals to 6.25. Now you have got the x square but you were asked about x. तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है and you will end up getting the value as around 2.2 or 2.3. Can anyone of you please confirm? Perfect. So it's 2.5 as the value of x right over here. Now we have got the value of x and that's it. अब यहाँ पर जो मार्किंग डिवीजन है आपकी, 2 मार्क्स यहाँ पर रिवॉर्ड किए जा रहे हैं आपको. तो एग्जामिनर आपको फर्स्ट मार्क देंगे फॉर दिस पर्टिकुलर लॉजिक. ये जो आपने एरिया फाइंड किया है और वॉल्यूम का
लॉजिक यूज किया है, एंड द सेकंड मार्क इज फॉर द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 मार्क्स रिवॉर्ड होंगे। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट द एग्जामिनर इज सेइंग दैट वी हैव शेप 3। अभी एक तीसरा शेप आ गया है विच इज अगेन अ प्रिज्म विद द सेम लेंथ। लेंथ यहाँ पर भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और एग्जामिनर हमें कह रहे हैं दैट two sides of the shaded triangle are at right angle and the length is 12y and 5y on either side। like आपको base given है और height given है। now they are saying the third side which is actually the hypotenuse is given as 13y। if you see हमें hypotenuse यहाँ पर given है as 13y। now they are saying that you need to factorize this particular value जबकि y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ द गुड थिंग हियर इज कि हमें यहाँ पर इक्वेशन को फॉर्मुलेट नहीं करना है, मुझे इक्वेशन प्रोड्यूस नहीं करनी है, बल्कि मुझे यहाँ पर सिर्फ फैक्टराइज करके आंसर देना है। सो आई जस्ट नीड टू फैक्टराइज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड रिड्यूस इट टू माय पर्टिकुलर आंसर। अब यहाँ पर आपकी जो फैक्टराइजेशन स्किल्स हैं वो यूज होंगी। you have the first term and the last term, you need to multiply them, that is going to give you negative of 132। now I need to think of two numbers जो कि multiply होकर 132 देंगे और add या subtract होकर 16 देंगे। so I need to have two numbers जो multiply होकर क्या दे दें मुझे 132 of negative, और ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर उनसे मुझे मिल जाएगा 16। सो वी नीड टू ट्राई एंड हंट डाउन द नंबर्स। तो हमारे पास जो भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो सारी हमने ट्राई करनी है। लेट्स स्टार्ट विद 2। तो आप 2 यूज कर सकते हो, बट विद 2 यू विल हैव 66। now you could use 4, but with 4 you will end up with 33। now 2 and 66 by no means can add or subtract to 16, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 4 and 33 are not going to give you 16 either। add subtract होने पे 4 और 33 में से 16 नहीं निकलेगा। now we need to try out some other number, so we have 6 which is 6 and 22। तो 6 और 22 पे आपको सब्ट्रैक्शन करने पे 16 मिल जाएगा। सो द पॉसिबल नंबर्स आर 16 एंड 22। सिंस वी आर गोइंग टू रिक्वायर पॉजिटिव 16 इन द सेंटर, तो हम बड़े नंबर के साथ यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे जबकि छोटे वाले के साथ नेगेटिव लगेगा, सो दैट वी हैव मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट एज नेगेटिव, ताकि मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आंसर मिल जाए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो अब मेरे पास नंबर्स आ चुके हैं। आई हैव -6 and +22। I'm going to try that out as the middle term। So it's 4y square minus 6y plus 22y minus 33। अब यहाँ से आप लोगों ने निकालने हैं कॉमन एंड यू विल एंड अप गेटिंग योर सिंप्लीफाइड फैक्टराइज्ड इक्वेशन। तो यहाँ से मैं 2y निकाल सकता हूँ। आई विल हैव 2y लेफ्ट with -3, and then from here I can take out 11। I'll be left with 2y again with -3। now if you people remember, तो algebra में हमने ये check पढ़ा था that whenever you are doing middle term break, तो मिडिल टर्म ब्रेक एक तो होता है 3 टर्म्स के ऊपर, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है 3 टर्म्स की इक्वेशन में वी डिड द मिडिल टर्म ब्रेकिंग, एंड with middle term breaking you will end up getting your brackets as exactly same। तो आपके ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम आ जाते थे। नाउ carrying this forward, so we'll end up getting 2y plus 11 with 2y of -3। I hope this is perfectly clear to every one of you। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है इसमें तो पूछ लें, otherwise we'll move on to the next question।
Yes, anyone of you having any sort of query? Mina, Mufaddal, Ramsha, anyone of you? ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे थर्ड क्वेश्चन के साथ हम हो गए कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, विच इज रिगार्डिंग अ कोन। इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोन में हमारे पास जो फार्मूलाज होते हैं वो गिवन होते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर, हमें कोन का शेप गिवन है, तो उससे रेलेवेंट जो दो फार्मूलाज हैं वो भी गिवन है। ऑल्दो टोटल सरफेस एरिया गिवन नहीं होता, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा। यू आर हैविंग अ सर्कल एट द बॉटम राइट ओवर हियर, so that's pi r square, and you have the curved region right over here, and the curved area has already been provided। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को एड अप कर लोगे टू गेट योर टोटल सरफेस एरिया। नाउ coming to the question, so the question is actually saying that we need to show that the slant height is 16.2। slant height is basically the length। if you remember, हमने L से represent किया था इसको, right over here it is, और ये हमें करनी है find। now if you remember, कोण पढ़ते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि slant height से relevant questions आ जाते हैं, and you can see over here for yourself, हमारे पास height given है as 15, हमें radius given है as 6। so we have 90 degree right over here, and we have this triangle as a 90 degree triangle। तो हमने क्या करना है, हमने इस triangle को logically use करना है, and we are going to use Pythagoras theorem over here, which is h square is equals to p square plus b square। now if you see, we have the hypotenuse to be found, the base has been given, and the perpendicular is 15। so we are going to put up these values over here। it's x square is equals to 15 squared plus 6 squared। तो इसको आप बस सॉल्व कर लेंगे, and you'll end up getting your final answer for the slant height। it would be 225 plus 36, that would be 261, taking up the square root since it is in paper 1। तो टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। द एग्जामिनर हैज अलाउड यू विद द कैलकुलेटर ओवर हियर। तो आपने रूट लेना है, एंड यू एंड अप गेटिंग 16.2 परफेक्टली एज योर हाइट। आपने सिर्फ यहाँ पर शो करना था। सो इफ यू आर एबल टू शो इट, यू विल बी रिवॉर्डेड 1 मार्क। अगर आप शो नहीं कर पाते, आपकी वैल्यू डिफरेंट आती है, या आपने लॉजिक कुछ और लगा लिए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि आप यहाँ पर एक 90 डिग्री ट्राइंगल के साथ डील कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई द लॉजिक्स ऑफ like right angle triangle, and that is going to be Pythagoras theorem over here। now moving forward, they are asking you about the total surface area of the cone। so as we have already discussed, आपके पास बॉटम पे एक सर्कल है right over here। you need to figure out the area of this circle as pi r square। then you have the curved region as pi r l। l आप यहाँ से find कर चुके हैं right over here, it is 16.2। what you're going to do is you're going to add up both of these things as pi r square plus pi r l। अब यहाँ पर आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, that is going to be 3.142 times the radius square plus 3.142 times the radius times the slant height, which is 16.2। अभी आप लोगों ने डालना है कैलकुलेटर में, और मुझे बताना है टोटल सरफेस एरिया। Can any one of you please tell me what's the total surface area? It's 3.142 times 6 square added up with 3.142 times 6 times 16.2।
इट शुड बी अराउंड 500 समथिंग, 450 या 500 के करीब वॉल्यूम आएगा. कैन एनीवन ऑफ यू प्लीज कंफर्म? ओके, सो इट्स 418.5. Perfect. So this is our volume, in fact, the total surface area. Now the next part is for the volume of the cone. The formula has been provided to you. It's 1 over 3 pi r square h. H हमारे पास होती है vertical line right in the center. तो हमने क्या करना है, हमने height को 15 consider करना है. We already have the radius as 6. Just need to put the values into the formula and we'll end up getting our answer. So the volume is going to be 1 over 3 pi r square h. So pi is 3.142, radius is 6 squared up, and then height is 15. आपने इन सारी वैल्यूज को पुट इन करके आंसर निकालना है and you will get the final volume for this cone. Can any one of you tell me what's the volume? It shall be around 550 something. Correct. 565.5. Okay, so we have our volume now. In the next part, they are saying the cone is made up from wood and 1 meter cube of wood is 560 kilograms. Now there's something very important. हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो एक्चुअली है सीएम क्यूब में, और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मीटर क्यूब्स में. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द वॉल्यूम into meter cubes. So if you remember we discussed this कि 1 मीटर क्यूब 1 with 6 zeros के बराबर होगा, यानी 1 million cm cubes के बराबर होगा. And we are going to apply the ratio method over here. So we are having 565.5 and x on the other side. Now you are just going to cross multiply and tell me the volume in meter cubes. तो आप जरा मुझे मीटर क्यूब्स में बता दें. It should be 565.5 divided by 1 million. Yes, can anyone of you please confirm if it's 0.000565? Yeah, is this turning out to be something like this? क्या यही आंसर आ रहा है? 565.5 को 1 मिलियन से डिवाइड करवाएं प्लीज, एंड लेट मी नो इफ दिस इज द आंसर और नॉट. Okay, so we are getting the same answer. Now we are moving on to the finding of mass in terms of grams. हमें ये बताया गया है कि 1 meter cube is equivalent to 560 kilograms. So what I'm going to do is I'm going to put up the ratio method again. And I'm going to find the value of x. So it is going to be 560 multiplied by this number, which is 0.0005655, and I'll get the value of x. तो आप में से कोई बता सकता है x की वैल्यू कितनी आ रही है?
Yes, can any one of you please confirm what's the value of x? Okay, so we have 0.316 kilograms. Now the catch over here is कि इन्होंने हमसे डिमांड किया था आंसर ग्राम्स में. So what we are going to do is we are going to multiply this with 1000 and get up the answer in grams. So it is going to be 316 grams for this particular cone. I hope this is perfectly clear to every one of you. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ लें, otherwise we'll move forward. Yes, any one of you having any sort of query in this? Okay. Now they are saying another cone is made of same material which is geometrically similar. The mass of the second cone is double. So we need to figure out the height. अब आपने similar figures का ratio यहाँ पर use करना है, which is L1 over L2 cube is equals to M1 over M2. Now, what we have got over here is the length or actually the height of our first cone, which is 15. The second cone's height is to be figured out. That would be x. और फिर हमारे पास mass है पहली cone का, which is our current cone as 316. And they are saying जो next cone है उसका mass double हो चुका है. So it is going to be 632. Now you just need to calculate it and you need to find the value of x. तो आपके पास 15 cube आ जाएगा यहाँ पर. You will have 15 cube divided by x cube is equals to 1 over 2. आपने 316 और 632 को cancel out कर दिया है. So can any one of you tell me what's 15 cube? Yes, what's the value of 15 cube? Anyone? Yeah, it's 3375. Now what we are going to do is we are going to take 2 onto the left and x cube onto the right. So it's going to be x cube is equals to 3375 times 2. And that would actually give you the answer as 6750. Now we are going to take up the square root, in fact the cube root on either side, and that would give you the value of x. Can any one of you tell me what's the value of x? Take up the cube root of 6750. और क्यूब रूट लेने के लिए आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करके जब क्यूब का बटन प्रेस करोगे तो आपको क्यूब रूट का ऑप्शन मिल जाएगा. शिफ्ट एंड देन द साइन ऑफ क्यूब. Okay, so it's 18.9 as our final answer. Now they are saying calculate the total surface area of the second cone. Now this is something very easy. आपके पास height आ चुकी है which is 18.9. You're going to put up the ratio of length and area now. So the length for the first one is 15. The second one is having 18.9. Area हमने find किया था, if you remember, in the very first part right over here. It was 418.5. So we are going to put it up over here. 418.5 divided by x. अब same logic आपने use करनी है and you would be able to figure out the value of x. Now we are keeping it till here for today. और यहाँ पर हमारे जो past papers हैं mensuration के वो हो चुके हैं complete. अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है या कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ लें. Otherwise we'll wind it up. Yes, anyone of you having any sort of query with anything from mensuration?
ओके, मेंसुरेशन का प्रॉब्लम ये है, या आई रिपीट दिस वन अगेन। यहाँ पर आपसे सरफेस एरिया पूछा गया है, एंड फॉर द सरफेस एरिया सिंस वी आर डीलिंग विद सिमिलर फिगर्स, तो हमने रेशो यूज करना है लेंथ एंड एरिया का। So the length and area's ratio is to be used over here, and this ratio is actually L1 over L2 square plus in fact equals to A1 over A2। अब आपके पास छोटे कोन का हाइट पहले से मौजूद है which is 15। If you see over here, it was 15 as the height। हमने छोटे कोन का हाइट रख लिया है as 15। फिर हमारे पास नेक्स्ट कोन का हाइट फाइंड हुआ था एज 18.9। we have placed it over here, and then the total surface area for the first cone was found as 418.5, और सेकंड कोन का आपने फिर एरिया x के तौर पे रखना है, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि आपने यहाँ पर किया था। So with this you will be able to find the total surface area of the new cone। Is it clear now? Okay, perfect। So I was saying that the problem with mensuration is कि इसके past papers काफी different होते हैं, and every single time you would see some different past papers, some different shape coming up। But the good thing is कि अगर आपने mensuration के 20 से लेकर 30 तक एटलीस्ट क्वेश्चंस अगर कर लिए, you would be very good at mensuration, और इसके सारे concepts आपके हाथ पे आ जाएंगे। So all the concepts and all the formulas would be on your फिंगर टिप्स। आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है दैट यू आर डूइंग एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन, एंड यू विल बी अ चैंपियन ऑफ इट। तो ये आपने बस मेक श्योर करना है, क्योंकि हर बार हर अटेम्प्ट में आपको डिफरेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस नजर आएंगे रिगार्डिंग मेंसुरेशन। So that's your task। I'll be forwarding the past papers to you, and you people need to make sure this time कि ये सारे past papers आप definitely complete करें, अदरवाइज मेंसुरेशन हाथ से निकल जाएगा, और अगर मेंसुरेशन हाथ से निकला तो आपका ग्रेड भी नीचे चला जाएगा, बिकॉज मेंसुरेशन हैज गॉट अ शेयर ऑफ अराउंड 16 to 18 मार्क्स। So you need to be very cautious with like mensuration, and you need to be very good at its concepts। So we are keeping it till here for today, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी संडे को probably। So see you then inshallah on Sunday। Take care। Allah Hafiz।